पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव! You're watching Truth versus Hype. Article 370 has been struck down and the Ram temple nears completion. And so the BJP has intensified the focus on the last of its long-running Hindutva-centric promises, a uniform civil code, meant to create uniformity in personal religious laws, especially by weeding out those practices considered discriminatory to women. So far, a perennial staple of the BJP's national manifesto, of late the promise of a uniform civil code is now being voiced in state after BJP state. Uttarakhand, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka. Uttarakhand has gone a step further. After the BJP won a second term earlier this year, Chief Minister Pushkar Dhami has set up a committee to study the feasibility of implementing a uniform civil code. All of this has triggered concern from opposition parties, Muslim leaders and organizations, as well as the liberal spectrum of civil society. But why the unease, asked the BJP, given that the Uniform Civil Code features in the Constitution? This is true. The UCC does find mention in Article 44. The state shall endeavour to secure a uniform civil code for the citizens throughout the territory of India. Worth remembering though that this is a directive principle, a guideline for governments to implement or not, as opposed to a fundamental right which is guaranteed to all under the law. But even as a non-binding concept, an argument could still be made for the need to reform personal laws. So why is the concern when the BJP brings up Uniform Civil Code? In a nutshell, the worry is that the main aim of a BJP-sponsored Uniform Civil Code is not gender justice as the party claims, but singling out minorities. The BJP has denied sectarian agendas. It claims it is acting in the interests of all women, and that the political and liberal resistance to a uniform civil code is yet more evidence of what the BJP calls minority appeasement. We sift the truth from the hype of the party's claims. Now on paper, it is true that the BJP's most recent Lok Sabha manifesto for the 2019 elections says a uniform civil code will protect the rights of all women. But in its rhetoric, the BJP and the wider Sangh Parivar has clearly signaled that the Uniform Civil Code is primarily meant to remove discriminatory practices in Muslim personal law, like polygamy. मैं तो जितना मुसलमान लोगों को मिला, सब लोग चाहते यूसीसी हो। कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा 3 छोटे लिए वाइफ लेके आए। हमारा ये देश को आफ्ताब नहीं चाहिए, हमारा देश को श्री राम जैसा भगवान चाहिए, इंसान चाहिए, मोदी जैसा हमको लीडर चाहिए। और हमारा देश में हमें सिविल कोड चाहिए, हमारा देश में लाठ जिहाद का खिलाफ हमें कानून चाहिए। इसमें क्या कंट्रोवर्सी है? क्यों नहीं कॉमन सिविल कोड होना चाहिए? कि आने वाले दिनों में हमारे मुस्लिम बहनों को न्याय देने के लिए, जो न्याय हमारे हिंदू बहनों के लिए वो न्याय देने के लिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करेगा? This is what Nitin Gadkari, Union Minister, said in December 2022. If a man marries a woman, that is natural, but if a man marries 4 women, that is unnatural. The progressive educated amongst the Muslim community do not marry 4 times. The Uniform Civil Code is not against any one religion. It is for the development of the nation. But even this rhetoric of Muslim polygamy is vastly exaggerated, ignoring the more complex reality of the phenomenon in India. In a consultation paper on the Uniform Civil Code produced in 2018 during the term of the first Modi government at the request of the Law Ministry, the National Law Commission found that polygamy is a rare practice amongst Indian Muslims and is frequently misused by non-Muslims who convert to Islam solely for polygamy. In fact, government data from the National Family Health Survey shows that polygamy is almost equally prevalent between both communities, with barely a gap between both. More evidence of the selective approach of the BJP, its silence on the discriminatory aspects of Hindu personal law. To be clear,
Muslim personal law practices are replete with rules and guidelines unfair to women beyond just polygamy. Further, the codification or formalization of Muslim personal laws and practices appears to have not kept pace with similar efforts by other communities. Hindu personal laws, for instance, are codified into 4 separate laws dealing with succession, marriage, and so on. But as many have pointed out, including the Law Commission, despite attempts at reform, unfair provisions exist in all religious codes, including the Hindu Civil Code, something the BJP rarely, if ever, refers to. Faizan Mustafa is a professor of law at Aligarh University. There is some truth in this statement that more part of Muslim personal law remains uncodified, even though there are statutory provisions for Muslim law relating to waqf, relating to dissolution of Muslim marriage. You have a 1939 law which was passed at the initiative of Muslim clergy and which gave a right to the Muslim women to dissolve marriage. Then you have several other laws, the post-Shahbano law we passed. So there are some laws within the Muslim law also where some reform has taken place. But if you compare the Hindu law and the Christian law and Muslim law, then it is fair to say that Muslim law is in need of a reform. I understand what you're saying. You're saying that it's true that the codification of Muslim law may not be to the extent of Hindu laws, but is it also true that there are many aspects of Hindu personal law also which, despite codification, need to be reformed? Yes, Vasu, because that is a misconception. Many of us believe that just because there is a codification, it would necessarily mean a law reform. If you recall, when the British were here and we reformed personal law for Christians, for instance, then we said that the daughter will get the share either 1/4 or 5,000, whichever is, more or less, Right. something like that. And then you had to Supreme Court intervene and then a law reform was made. So even within Hindu law, yes, where you had a massive reform in 1955, there are areas of reform which, before you enact a uniform civil code, are to be considered. For example? So once you are done with Muslim law reform committee, you have to go back to the Hindu community and prepare ground for those kind of reforms. For instance, Hindu wife, even after 2005 amendment, till 2005, Hindu daughter was not a co-partner in the Hindu joint family. So she did not have a birthright in the ancestral property. Hindu wife is still not a co-partner. So there are several areas of reforms about the power of a Hindu to make a will to defeat the provisions of succession under the Hindu Succession Act, which would need a relook. amongst the Hindu practices the Law Commission suggests need reform includes the provision under the Hindu inheritance law, which stipulates that if a Hindu woman dies with no heirs, the property she inherited from her husband goes to her husband's family, while for a Hindu man in the same position, it's passed on to his relatives. Also, a provision under the Hindu Minor and Guardianship Act, which states that men, not women, are the natural guardian of children, needs reform. The Law Commission also calls for the banning of the concept of the Hindu Undivided Family, or HUF, in which Hindu families can declare their ancestral property as a joint entity for tax exemptions. The Commission says this is not congruent with corporate governance, nor is it conducive for the tax regime. In fact, the Law Commission's 2018 report poses the greatest challenge to the BJP's push to bring a uniform civil code anew, given that the Commission had already held such consultations for over 2 years, concluding that while there are no clearly discriminatory practices in the personal laws of all major religions in India, a uniform civil code is not desirable or necessary at this stage because of the vast diversity of the religious and cultural practices in India. The Commission goes on to say on the Uniform Civil Code that the mere existence of difference does not imply discrimination but is indicative of a robust democracy. India's cultural diversity can't be compromised.
The term secularism only has meaning if it can also assure that any form of difference doesn't get subsumed under the louder voice of the majority. At the same time, the Commission says no discriminatory practice should hide behind the cloak of religion to gain legitimacy, and suggests that a better solution is to reform or codify the individual laws of religions rather than attempt a uniform approach. And yet the Commission's vetoing of the Uniform Code remains unacknowledged by the BJP in its latest push. In fact, unlike other inputs prepared by the Commission which are published as reports, this one has been downgraded to a consultation paper. This is surprising given that the 5-member commission, which was headed by Justice B.S. Chauhan, the former Supreme Court judge, featured members linked directly to the BJP, like Satyapal Jain, Additional Solicitor General and former BJP MP and member of its national executive. Neither Justice Chauhan nor Satyapal Jain were willing to comment when we reached out to them. So suppose a uniform civil code and come and... We did, however, interview Soumya Saxena, a historian at Cambridge University and a researcher for the Commission's Uniform Civil Code project. She told us that she was surprised about the report being downgraded to a consultation paper. As experts on the committee who were simply advising, I hesitate to say, I mean, for reasons best known to the government, for some reason it came out as a consultation paper and not a report, which was surprising because it did contain a whole bunch of amendments. It could have simply come out as a report and then been considered, but I suppose for whatever reasons it did come out as a consultation paper. Why was it downgraded? She didn't want to speculate. One reason could be that the findings of the Commission ruling against a uniform code was based on multiple inputs from women stakeholders, the very group that the BJP claims will receive justice through the code. There was a very large, attempt to really consult a lot of women's organizations, and it was basically the demand of the primary stakeholders, which is women, which is reflected in the report. And these organizations had very pointed ideas about why they wanted reform, and also that reform would not necessarily need to be in the form of a uniform code. What they didn't want was to create a Shahbano-like choice for women again, where women are opting into either their community rights and their community identity, or an abstract promise of rights coming under a uniform civil code. Instead, what they seemed to advocate for was amendments to personal law, intervention, I mean definite state intervention. Is this the report the government was expecting you to come up with? Well, I think they were definitely expecting us to engage with personal law reform, which we did. Okay. And the fact that it did not, I mean, and it also assessed the feasibility of a uniform civil code. It just decided against recommending one, but it did assess the feasibility. And in fact, very clearly so. It said that, we assessed it and we don't think it's the right time for it. Did that take them by surprise, you think, the government? Was there a sense of a little bit of a... See, a lot of these commission reports, like the way it is in our country, they lie in the waiting room of history forever till somebody thinks that, or somebody picks it up and says, oh, there should be a bill about this. That happened with Christian personal law, first introduced in 1961, came to be in 2001. So I suppose my hope is that if not this government, a government will pick it up for the sheer, potential for reform it carries. Right. But given that it was 3 years after the commission ended in 2018 that the new committee was even appointed, I don't think it was taken very seriously as a reform project immediately. I mean, not flowing from the report at least, because Uniform Civil Code still makes it into news without us knowing anything about what the template will entail, the kind of reforms it will have. So I suppose they don't intend to table it anytime soon. I do think a whole bunch of opposition leaders have brought this into Parliament a number of times. We put all of these questions to the state BJP chief in Uttarakhand. Remember, a state which has taken the lead in attempting to implement a uniform civil code. This was his response. आपने ये कमेटी की गठन की है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देख रही है. ये भाजपा का बहुत पुराना प्रॉमिस रहा है, लेकिन इसको लेकर काफी आपत्ति
जती है, ऑपोजिशन पार्टीज, अलग अलग संगठन, मुस्लिम संगठन, बाकी संगठन कह रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये सारे जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं ये उनके बारे में नहीं है। आप ज्यादातर मुस्लिम पर्सनल लॉ, एंटी मुस्लिम, ये माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो बहुत मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं जी कि देश की एकता के लिए देश के सभी वर्गों को समान नागरिकता के पक्षधर के रूप में खड़ा करने का एक मैसेज उत्तराखंड से देना चाहते हैं। अच्छा। और समान नागरिक संहिता में ऐसे अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून, इस दृष्टिकोण से भी एक देश की एकता पर प्रश्न खड़ा होता है। और मैं कह सकता हूं उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो सभी नागरिकों एक दृष्टि से देखने का प्रयास करेगा। तो और सभी नागरिक एक दृष्टि से, एक भाव से देश में नागरिकता के रूप में रहें, इस भाव का पहला मैसेज देने वाला देवभूमि उत्तराखंड है। और हमने इसके लिए कमेटी बनाई है जी। तो इसमें तो आप कह रहे हैं कौन से कानून हैं? नहीं, कमेटी आपने बनाई है, ऐसे कौन से कानून हैं इस वक्त, पर्सनल लॉज, जिनसे आपको आपत्ति है, जिनकी वजह से आप इसको लाना चाह रहे हैं? उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं? देखिए, मैं कह सकता हूं, देखिए उत्तराखंड के, मैं अगर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से अगर बात करता हूं जी, तो अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई हैं जो एक प्रकार से विवाह का कानून का मैं बात करूं और धर्म परिवर्तन का विषय है, इन सबको जोड़ते हुए आखिर देश के अंदर समान नागरिकता दिखाई दे, इस भाव के अनेकों उदाहरण हमारे सामने पिछले दिनों घटित हुए हैं, जिसकी मैं प्रारंभ में चर्चा कर रहा था। इन दृष्टिकोण से समाज के अंदर एक रूपता बनी रहे। नहीं, कैसे? मैं बता रहा हूँ, जैसे विभाग से संबंधित विषय है, अनेकों न्यायालय से संबंधित विषय है। नहीं, विवाह से संबंधित वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, विवाह से संबंधित कौन से विषय हैं जिनसे आपको लगता है कि कानून बदलना चाहिए? मैं उस विषय को कह रहा हूं। देखिए, आखिरकार विवाह पद्धति का अलग पक्ष किसी धार्मिक पद्धति का हो सकता है, लेकिन दूसरे धर्म से किसी लड़की का अपहरण करने के बाद विवाह को मान्यता देना, ये जो पक्ष है, एक पक्ष ये भी हमारे राज्य के अंदर पिछले दिनों दिखाई दिया। इसके साथ भूमि से संबंधित विषय हमारे राज्य के अंदर दिखाई दिए। अनेकों दृष्टिकोण के साथ अनेकों ऐसे कानून हैं जो धार्मिक पक्ष से बटे हुए हैं। इसलिए सामाजिक रूप से एक दृष्टता दिखाई दे, एक स्वरूप में देश दिखाई दे, इस भाव का पहला मैसेज राज्य में जा रहा है। अनेकों उसके नहीं, आप बार बार कन्वर्जन का जिक्र कर रहे हैं, वो एक अलग मसला है, वो उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं है। कन्वर्जन इज परमिटेड अंडर द लॉ, इलीगल कन्वर्जन इज इलीगल। लेकिन मेरा ये सवाल है कि बार बार जब भी भाजपा इसका जिक्र करती है, जैसे आपने कन्वर्जन की बात की, तो एक तरह से आप हमेशा मुस्लिम्स की तरफ, क्रिश्चियंस की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन जैसे कई लोगों ने कहा है कि हिंदू पर्सनल लॉ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हटाना चाहिए, जिनका रिफॉर्म होना चाहिए, जैसे कन्यादान का जो मुद्दा आता है, या जैसे एक सेकंड, जैसे हिंदू इनहेरिटेंस लॉ में कहता है कि अगर कोई हिंदू लेडी की डेथ होती है तो सारा उनका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हस्बैंड के फैमिली में जाता है, कि हिंदू गार्डियनशिप के एक्ट के अंदर सिर्फ मर्दों को बच्चों की गार्डियनशिप मिलती है, महिलाओं को नहीं। तो क्या ये सारी चीजें भी हटेंगी अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड? निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो विकृतियां हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक दृष्टि से समाज के दायरे में लोग बटे हुए हैं, उन अलग अलग कानूनों की दृष्टि से समाज के अंदर दरारें पैदा करती हैं। उस भाव को ठीक करने की दृष्टि से समान नागरिक संहिता का जो कानून आ रहा है, उसमें ये सारे विषय, विवाद संबंधी विषय भी हो सकते हैं, सारे धर्मों का होगा, अधिकार से संबंधित विषय भी हो सकते हैं, उसमें सारे। मैं बता रहा हूँ, समान नागरिकता की बात आ रही है, मुस्लिम, हिंदू, जब समान नागरिकता की बात जी, जब समान नागरिकता की बात आती है तो मैं आपको कह सकता हूं, उसमें सब प्रकार के ऐसे विरोधाभासी जो प्रावधान किसी भी क्षेत्र में अगर एक दृष्टि से समाज का स्वरूप दिखाई दे, उसका एक मॉडल हम उत्तराखंड की ओर से हम देना चाहते हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि जो इतने अच्छे सुझाव जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि क्यों इसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि जो आप लोगों ने कमेटी गठित की है, ऐसी ही कमेटी, शायद आपको आइडिया होगा, लॉ कमीशन, इसी सरकार के अंदर, मोदी सरकार के अंदर जो नेशनल लॉ कमीशन है, 2018 में उन्होंने 2 साल इस पे इसी किस्म का चर्चा, पूरा विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड को देख के उन्होंने कहा कि इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड ना फीजिबल है ना नेसेसरी है, देश में इस किस्म का कोड लाने की कोई जरूरत नहीं है।
देश में बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज हैं, रीजन्स हैं, रिलीजन्स हैं, उनको इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उससे जो देश की डाइवर्सिटी है उसको खतरा पहुंचेगा। तो उन्होंने माना है कि इस यूसीसी का कोई इस वक्त नेसेसरी नहीं है। क्या आप इस बात से वाकिफ थे? मैंने शुरू में इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड राज्य ये पहला राज्य बनने जा रहा है कि जिसमें हम इस प्रावधान को लाने का हम लाएंगे, और इस प्रावधान को लाने के बाद समानार्थक के विषय धीरे धीरे अन्य राज्यों में ये विषय जाएगा। इसलिए जनता के सुझाव मैं कह रहा हूं कि नेशनल लॉ कमीशन ने 2018 में, मेरी बात तो नेशनल लॉ कमीशन में 2018 में ही कह दिया था कि ऐसी लॉ लाने की जरूरत ही नहीं है, न फीजिबल है न नेसेसरी है। ये नेशनल लॉ कमीशन कह रहा है। देखिए, हर राज्य के अंदर अपनी परिस्थितियां होती हैं। हम अपने राज्य के दृष्टिकोण से इस विधेयक को ला रहे हैं, और यहाँ की जो इस प्रकार की समस्याएं, जो दिक्कतें आ रही हैं, आखिर कानूनी पक्ष का भी एक पक्ष होता है जो सारे विषय में आगे रखे हैं। अब ये हमारे राज्य में अगर इंप्लीमेंट होता है, इसको हम लागू करते हैं, तो उसके परिणाम जो है, जब सुगत परिणाम आते हैं, राष्ट्र को एक करने के भाव के परिणाम आते हैं, धीरे धीरे सब राज्यों में विषय आएगा, और फिर नेशनल लॉ कमीशन भी इस चीज को समझेगा कि इन राज्यों में इसके परिणाम अच्छे हैं। तो ये जब अच्छे परिणाम निकल कर आते हैं तो उसका पूरे देश के अंदर स्वागत होगा। ठीक है, 2018 की परिस्थितियां होंगी, हमारे राज्य की, देश की अलग परिस्थितियां, हमारे राज्य की अलग परिस्थितियां हैं, इसलिए समान नागरिक संहिता का पहला मॉडल राज्य ये उत्तराखंड बनेगा। और मैं कह सकता हूं, मुझे बताते हुए खुशी है कि अनेकों मुस्लिम धर्मावलंबियों ने भी इस कानून का स्वागत किया है। ऐसा नहीं है कोई विरोध हमारे राज्य के अंदर हो रहा है। अनेकों लोगों ने समान नागरिकता संहिता के दृष्टिकोण से जो अपने सुझाव दिए, उसमें सब धर्मों के लोग हैं। वत्स साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।